हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रीराम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम क्लास रंबस परिमितिर अनुसरणी 5F एक नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आंसर प्रत्येक क्वेश्चन मुझे तो देख केमी मुझे भल भाव क्वेश्चन आंसर को बुझा चेष्टा कर न बुझीपार वीडियो को बारंबार देखी से आंसर तक भल भाव बुझ तो डेरी नक जा प्रथम क्वेश्चन आंसर करेगा। और जब वीडियो भल लगे तेरे चैनल को सब्सक्राइब करनब, वीडियो को लाइक कर सांग पाखक सेयार करनब। प्रथम क्वेश्चन देख, निम्न रंबस कर्णद्वार दैर्घ्य दत्त अच्छी आम प्रत्येक स्थान में क्षेत्रफल बाहर करवा। जी आमको रंबस कर्णद्वय दत्त थाए तेबे रंबस क्षेत्रफल आम बाहर कले आम लिखा रंबस क्षेत्रफल हम हाफ इंटू कर्णद्वयर गुणफल। बुझे तो रंबस क्षेत्रफल कौन ना हाफ इंटू कर्णद्वयर गुणफल। तो आमको देती कर्ण देती गोटे 16 सेंटीमीटर आ गोटे 20 सेंटीमीटर। तो लिखा रंबस क्षेत्रफल इजिकाल टू हाफ इंटू 16 गुणन 20। देन तापर कौन करवा 20 को 2 काटिले केते 10 देन 16 दशा 160 वर्ग सेंटीमीटर। बुझीला। सेकेंड क्वेश्चन देख कौन देती से टाइप कर रंबस क्षेत्रफल के बाहर करवा। क्षेत्रफल कौन लिखा ना हाफ इंटू कर्णद्वयर गुणफल हाफ इंटू 20 इंटू 15.4। देन आम कौन कर देख हाफ इंटू 20 इंटू 15.4 टाक लिखिपर के ना 154 बाई 10 लिखिपर। देन दशमिक पर गोटे संख्या था एक गोटे शून्य देली देन 0 को 0 कटिला 2 को 2 कटिज आर के 154 के वर्ग मीटर। बुझेगा। जीवा थर्ड क्वेश्चन रंबस क्षेत्रफल बाहर करवा। क्षेत्रफल कौन लिखा हाफ इंटू कर्णद्वयर गुणफल कर्ण देजी गोटे 8√2 आ गोटे 4√2। देन आम कौन करवा देख √2 को √2 गले कौन हम 2 हो तो से 2टा ये तले 2 रे कटि जाऊँगी। मन रख √2 को √2 गले 2 यही 2टा को मुझे 2 रे काटिदेली तब आर चौ के 32 वर्ग मीटर। बुझिपार ये तुम 1 नंबर क्वेश्चन। देन जी आम 2 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन देती रंबस कर्णद्वय दे देती आम प्रत्येक स्थल में कौन बाहर करवा बाहु बाहर करवा। जी आमको रंबस कर्ण दत्त थाए तो आम बाहु पाइका सूत्र हूँ d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर होल रूट हम। d1 कौन ना d1 हूँ रंबस कर्ण, d2 कौन ना रंबस आ गोटे कर्ण। तुम ये d1 हुए तो यहाँ हूँ कौन d2 यहाँ d1 यहाँ हूँ d2। तो रंबस बाहु के बाहर ना d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर होल रूट हम। देख आम बाहु बाहर करें प्रथम क्षेत्र में कौन देती गोटे 40 मीटर कर्ण देती आ गोटे 30 मीटर कर्ण देती मुझे सूत्र को आउे पकाऊँगी। तो d1 मोर हूँ 40 d2 हूँ मोर किए 30। तो बाहु के बाहर करी ना 40/2 होल स्क्वायर प्लस 30/2 होल स्क्वायर कौन करी होल रूट ओवर देवी। देन आम कर 40/2 के 20 स्क्वायर प्लस 30/2 के 15 स्क्वायर होल रूट ओवर। देन आम तापर जी 20 स्क्वायर के ना सर 20 स्क्वायर हूँ 400 प्लस 15 स्क्वायर हूँ के ना 225 होल रूट ओवर। देन 400 और 225 मिसले के 625 होल रूट ओवर क्या सहित सामान 625 रूट ओवरटा 25 सहित सामान। तो बाहु बाहर तो एक हूँ कौन सेंटीमीटर कारण सेंटीमीटर देता बाहु वाला सेंटीमीटर बुझे। देन आम जा सेकेंड को जा
सेमती से टाइप करवा आम भाव के बाहर ना 14/2 होल स्क्वायर प्लस 48/2 होल स्क्वायर बुझे यहाँ 48/2 होल स्क्वायर होल रूट हम देन तापर 14/2 के दूसरी ना 7 स्क्वायर प्लस एटा 24 स्क्वायर होल रूट हम आम लिखिपर 7 स्क्वायर के 49 प्लस 24 स्क्वायर के 576 होल रूट हम 76 49 मिसले के ना 625 होल रूट हम 625 रूट ओवरटा केते हेबो ना 25 मीटर देथिला मीटर देन थर्ड क्वेश्चन जीवा सेन कौन बाहर करवा भाग बाहर करवा भाग केते देछि 1.6/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर होल रूट ओवर 1.6/2 केते हेजिवो ना 0.8 होल स्क्वायर प्लस 3/2 केते हेजिवो 1.5 होल स्क्वायर होल रूट ओवर 0.8 स्क्वायर केते हेजिवो 0.64 प्लस 1.5 होल स्क्वायर केते हेजिवो 2.25 होल रूट ओवर तापरे एदिरा मिसले केते होछि 2.89 होल रूट ओवर 2.89 कहार रूट ओवर ना 1.7 मीटर मात्र रूट ओवर तो दशमिक दुईटा संख्या अछि रूट ओवर बाहर दशमिक गोटे संख्या हो बुझे जीवा आम 5 क्वेश्चन देछि से भाव बाहर करवा आगे सब निजे तुम ट्राए कर तापर तुम यदि न बुझी पार्छ भल भाव आउ थे वीडियो को देख तापर ताको कर तो देछि 1.8/2 होल स्क्वायर प्लस 2.4/2 होल स्क्वायर होल रूट ओवर देन 1.8 माने 18 अध्याय 0.9 0.9 होल स्क्वायर प्लस 24 एटा 24 एटा 12 हो पॉइंट छाड़ी एत पॉइंट तर होल स्क्वायर होल रूट ओवर देन तापर अधिक 9 अच्छी तो एक आसी तो 0 पॉइंट कौन लिखा 0.81 बुझे यही टाइप कर बाहर के लिखा 144 लिखा 1.44 होल रूट ओवर देन तापर 225 दशमिक छाड़ी दुईटा संख्या दशमिक छाड़ी दुईटा संख्या बसईदेवा देन यहाँ के 1.5 मीटर ये तुम 2 नंबर क्वेश्चन तापर जी आम 3 नंबर क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन गोटे रंबसर क्षेत्रफल 840 वर्गमीटर यार गोटे कर्णर दैर्घ्य 42 मीटर तापर कौन पचार यार अन्य कर्णर दैर्घ्य आ परिसीमा निर्णय कर आम नहीं ए बी सी डी हूँ गोटे रंबस रंबसर दीटा गोटे कर्ण दे देछि केते कर्ण को ओ बिंदु छेद करुच्ची आमर रंबसर कौन कही ना गोटे कर्ण दैर्घ्य दे देछि मनकर गोटे कर्ण हूँ बीडी बीडी आमको दे देछि केते 42 मीटर दत्त अच्छी तापर आमर क्षेत्रफल केते कही 840 अन्य कर्ण बाहर करिया कही आउ परिसीमा बाहर करिया कही आमे जानिछे रंबसर क्षेत्रफल केते बाहर रंबसर क्षेत्रफल हाफ इंटू कर्ण दैर्घ्य गुणनफल हाफ इंटू कर्ण दैर्घ्य गुणनफल तो रंबसर क्षेत्रफल केते देछि देखिबा 840 इक्वल्स टू हाफ इंटू गोटे कर्ण केते 42 आ गोटे कर्ण कि एसी तो हाफ इंटू 42 इंटू एसी लिखिदेवा एसी आम बाहर करवा ना तो तापर कौन करवा ना 840 लिखले तो एसी केते हो ना 840 देख ये 2 को 42 कौन करी काटिदेवी केते लिखा दूसरी 21 हो तो 21टा एसी सहित गुणिक अच्छी जो दुईटा एपटू ने कौन हो हरी हो तो 840/21 आम बाहर के 40 मीटर तो अन्य कर्ण बाहर पड़ा के 40 मीटर यहाँ हूँ अन्य कर्ण 40 मीटर बुझेगा तापर आम कौन बाहर करवा परिसीमा बाहर करवा परिसीमा बाहर करने पूर्व आम कौन बाहर करवा दरकार बाहु बाहर करवा दरकार तो फास्ट बाहर करा कौन बाहु तो बाहु के बाहर ना d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर ये d1 किए तुम हूँ के 42 तो लिखा 42/2 होल स्क्वायर प्लस आउ गोटे कर्ण के 40 40/2 होल स्क्वायर होल रूट ओवर तो 42/2 कले के 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर होल रूट ओवर 21 स्क्वायर के 441 प्लस 20 स्क्वायर के
400 ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ତମର ହେଲା କେତେ 841 ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହେବ। ବାହାରି ପାରିଲା କେତେ 29 ମିଟର। ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ରମ୍ବସର ପରିସୀମା। ରମ୍ବସର କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପରିସୀମା। ତ ରମ୍ବସର ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାରିବ ତମର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଯାହା ରମ୍ବସର ପରିସୀମା ସେଇଆ। ତ 4 ଗୁଣନ କ'ଣ ଲେଖିବା ବାହୁ। ତ 4 ଗୁଣନ ବାହୁ କେତେ 29। ତ 29କୁ କେତେ 116 ମିଟର। ବୁଝିଲା ତ। ଦେନ୍ ଆମେ କରିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏକ ରମ୍ବସର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟର 3 ଗୁଣ। ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ନେବା କ'ଣ ମନେକର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି x ନେବା। ମନେକର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ କିଏ ସେଟାକୁ ତମେ ନିଅ x। ତ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟି କେତେ ହେଇଯିବ 3 ଗୁଣ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3x ହେବ। ତ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 3x। ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1944 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣଫଳ। ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ x ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ 3x। ତ ଲେଖିପାରିବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ x ଇଣ୍ଟୁ 3x କାହା ସହିତ ସମାନ ନା 1944କୁ 3x ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 3x²। ଦେନ୍ 1944 ଏପଟେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି ହରିକି ଅଛି ଏପଟେ ଲୋକ ହେଇଯିବ ଗୁଣି ହେଇଯିବ। ତାପରେ x² ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1944 ଗୁଣନ 2/3। ଦେନ୍ x² ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 1296। ଦେନ୍ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1296 ରୁଟ୍ ହେବ। ତାପରେ 36² କଲେ 1296 ହେବ। ତ x ବାହାରିଲା କେତେ 36 ମିଟର। ତେବେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମର କେତେ 36 ମିଟର। ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କେତେ 36 ମିଟର। ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟି କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ତାର 3x। ଏଇ x ର 3x କେତେ ହେଇଯିବ 3 ଗୁଣନ 36। ତ 36 କେତେ 108। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଗୋଟେ ହେଉଛି 36 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 108। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 648√3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାର ନାମ ଦେବା ABCD। ଆମକୁ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି କେତେ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ବୁଝ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ କି କୋଣ ଅଙ୍କନ କଲି ଏ କର୍ଣ୍ଣଟା ଏ ରମ୍ବସକୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଏଇଟା ଯଦି ମୋର 60 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା ରମ୍ବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ। ତ ଏ ବାହୁ ଯେତିକି ଏ ବାହୁଟା ଆମର କ'ଣ ସମାନ ସେତିକି ଥିବ। ଯଦି ବାହୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ତାର କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବେ ସମାନ ହେବେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ଯଦି ଆମର 60 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ତିନିଟା କୋଣ ମିଶିକି କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଯଦି ତିନିଟା କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତେବେ ଏଇଟା ଯଦି 60 ହୁଏ ଆଉ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି କେତେ ହେବ 120 ହେବ। ତ 120 ହେଲେ ଦୁଇଟା ଯଦି ସମାନ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ହେବେ 60 ହେବେ। ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତମର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ତମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା AB ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ BC। ସେଥିପାଇଁକା ଆମର କୋଣ ଦୁଇଟା ସମାନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ମୁଁ ଲେଖିବି ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ABCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ୍ରିଭୁଜ ABCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ବାହାର କରିବି ତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ କରିବି ନା √3/4 ଇଣ୍ଟୁ A²। √3/4 ଇଣ୍ଟୁ A²। ଏ ବୋଲି ଆମର BCର ସ୍କୋୟାର BCର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପକେଇବି ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 2 ଗୁଣ ଦେଲେ ମୋର ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯିବ। ତ 2 ଗୁଣନ √3/4 ଇଣ୍ଟୁ BCର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିଲା। କାରଣ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ମୁଁ ଯଦି 2 ଗୁଣ ଦେଉଛି ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହା ଆମର ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ସେଇଆ। ତ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ। ତ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ 2ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ତ ଲେଖିବା ଏଠି 2 ଗୁଣନ √3/4 ଇଣ୍ଟୁ BCର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 148 √3
ଉଭୟ ପଟରୁ କଟି ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା BCର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା। BCର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ହେଉଛି ନା 648। ଏଠି ଆମେ 2କୁ 4 କାଟିପାରିବା, ତ 2କୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 648 ଗୁଣନ 2, ଏଇଟା ଆମର କାହା ସହିତ ସମାନ BCର ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା BCର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 648 2ରେ ଗୁଣିଲେ 1296। ଖାଲି BC ବାହାରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1296ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ତ 1296 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 36, ତାପରେ ଦେବା ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି ଏହା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହୁଏ ତେବେ କର୍ଣ୍ଣଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 36 ହେବ। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ତ ଲେଖିପାରିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 36 ମିଟର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତର କର୍ଣ୍ଣ, ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ରତର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 36 ମିଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣ, এই କର୍ଣ୍ଣଟା ଆମର ବାହାର କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇ ଥିଲା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରୁଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ଗୋଟିଏ ରମ୍ବସର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ। ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ରମ୍ବସ ଅଛି, ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। କର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ হবে ସମାନ ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ABCD ଯଦି ଗୋଟେ ରମ୍ବସ ହୁଏ ତେବେ ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରମ୍ବସର ପରିସୀମା ଦେଇଦେଲା 48, ତ ଯଦି ପରିସୀମା ହେଉଛି 48 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାହୁ ବାହାର କରିବା କେମିତି ନା ରମ୍ବସର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା 4 ଗୁଣନ ବାହୁ। ତ ଏଇ 48ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 4 ହରିଦେବି, ତ 48 4 ହେଲେ କେତେ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ରମ୍ବସର ବାହୁ କେତେ ବାହାରିଥିଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି ଏଇଟା ବାହାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାହାର ହେଇଗଲା। ତାର ପଚାରିଛି କ'ଣ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ତମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯଦି ଏଇଟା 3ଟା କି ବାହୁ ସମାନ ତେବେ ଏଇଟା କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ସମବାହୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି, ସେଥିରେ 2 ଗୁଣ ଦେଲେ ଟୋଟାଲ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ABCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ନା କେତେ √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁ ବାହୁ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା ଆମେ ABର ସ୍କୋୟାର। ଯଦି ମୁଁ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବି, ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖିପାରିବି 2 ଗୁଣନ √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ABର ସ୍କୋୟାର। 2 କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁଣିଛି ଜାଣିଛ ତ, କାରଣ ଏଥିରେ ଯଦି 2 ଗୁଣି ଦେବି ମୋର ଦୁଇଟା କି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 2କୁ 4ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି 2, ଲେଖିପାରିବା ଆମର AB କେତେ ଦେଇଛି AB ହେଉଛି 12, ତ ଏଠି ପକେଇ ପାରିବା 144 ଗୁଣନ √3/2। ଦେନ୍ ଆମେ 144କୁ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି 72 √3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଏ ବାହାରିଲା କ'ଣ ତମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖିବ। ଅତଏବ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 72 √3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ରମ୍ବସର ପରିସୀମା। ତ ଲେଖିବା ପରିସୀମା କେତେ ଦେଇଛି 16 ମିଟର। ତ ବାହୁ କେମିତି ବାହାରିବ, ତ ବାହୁ ବାହାରିବ ପରିସୀମା ବାଇ 4 କେତେ ହେଇଯିବ 4 ମିଟର। ବାହୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 4 ମିଟର। ତାପରେ କହୁଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ମିଟର। ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କହୁଛି ନା 6 ମିଟର, ବାହୁ 4, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ମିଟର ହେଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରମ୍ବସର ବାହୁ ପାଇଁ ମନେକର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନେବା କେତେ ଲେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ କେତେ 6, ତାପରେ ଲେଖିବା ମନେକର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇଯିବା 2x ନେଇଯିବା। ତ ବାହୁ ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ବାହୁ ଇଜିକାଲ୍ କ'ଣ D1/2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ D2/2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ବୁଝଉଛି। ଦେନ୍ ଆମକୁ ବାହୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା 4, ବାହୁ ଆମେ ବାହାର କଲେ 4ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବୁ 4ର ସ୍କୋୟାର
इजिकाल टू आम कौन लिखा मुझे रूट गुटा को एपटू आनिक स्क्वायर कर दूसरी तो d1/2 d1 के मन कर गोटे बाहु देते 6 तो 6/2 6/2 होल स्क्वायर प्लस 2x/2 होल स्क्वायर 6/2 के 3 स्क्वायर प्लस 2x कटिले के एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर एपटे लिखिपर बुझिपाल देन आम करवा 4 स्क्वायर के 16 जे 3 स्क्वायर के 9 प्लस एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16 कौन कर 9 फेरदेवा 16 माइनस 9 16 9 गले के 7 देन एक्स इजिकल टू 7 होल रूट ओवर बुझे 7 रूट ओवर हो तो 7 रूट ओवर मीटर जदि अन्य कर्ण ताले केते होला अन्य कर्ण को हम नेथिले केते 2x नेथिले तो 2x इजिकल केते हो 2 गुणन रूट 7 मीटर बुझौछ ना नहीं तो अन्य कर्ण दैर्घ्य बाहर पड़ला अन्य लिखवा एठी अन्य कर्णर दैर्घ्य केते 2 रूट 7 मीटर तार पचास कौन रंबसर क्षेत्रफल लिखा रंबसर क्षेत्रफल कौन ना हाफ इंटू कर्ण द्वारा गुणफल गोटे कर्ण 6 आ गोटे कर्ण केते 2 रूट 7 तापर 2 को 6 कले 3 देन 3 दुगुणे 6 रूट 7 वर्ग मीटर तो ये थिला 7टी क्वेश्चन आंसर यदि वीडियो को बुझीपार वीडियो जब भल लगुच तेज वीडियो गोटे लाइक करनब सांग सेयार करने कि आम चैनल को सब्सक्राइब करनब रोचे धन्यवाद।